सर पहला क्वेश्चन ये है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कैसे करें, क्या सही अप्रोच होना चाहिए। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है, जो एग्जाम से 5-10 दिन पहले मॉक टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। Hello everyone, I am Tanmay Kale. I secured All India rank 230 in UPSC CSE 2021 and I am here to share my strategy for prelims mains with you guys. In prelims, first of all, what we have to remember is that the answer is given in front of us. We just have to find that answer. Once you remember this, that we have to find the answer, it would ease you of the burden which the prelims exam comes with, because PT is I would say one of the most difficult part of this exam because it is very uncertain. So to bring up with a strategy, what I used to do, first thing is that we have to stick to the basics. I covered all the static portion which is given in main syllabus. So the only UPSC gives only main syllabus. They don't give us the syllabus of prelims, extensive syllabus of prelims. They just mention that you have to read the topics of general awareness. So in the course of UPSC preparation, we all have came to know that what is the static portion. So we have to cover the static portion, the modern history, the polity or the economy portion. We first have to cover that. And after covering that, then we have to refer to the magazines, or we have to understand the editorials and we have to read upon the news given in the newspaper. So for people who are appearing for the first time, OnlyIAS editorial discussion, this is a very extensive and very comprehensive thing to understand that what we have to extract from that editorial, what we have to extract from the editorial and write in the paper or even use in the prelims. So OnlyIAS editorial gives you insight on what is the requirement of the question, because when sir discuss, he extensively covers the main part of the question, the body which we have to write in the mains. So for example, I would say one article was there. 1 year back I was listening to the article. It was on the criminal justice system in India. So in that sir discussed the evolution of criminal justice system in India. It was given in the editorial also, and sir added from his side. So evolution of criminal justice system in India, the problems of criminal justice system in current times, and what the committees have recommended and what can be done. So the discussion in the editorial is based on the structure of the main answer only. In the way we have to structure the main answer, that what is the first thing is that introduction, second the body part, in that we have to briefly describe about the history, then we have to talk about what are the problems in that sector, then third the solutions given by some committees or what government is doing on that, and at the end our solution, and conclude it with a simple 2 or 3 lines answer. So the discussion in the editorial is based on that framework only. So in that way, if you listen to the editorial daily, it would help you understand what is the need of the answer. And second thing is the current affairs which we have to cover. So any newspaper you refer, either it the Hindu or Indian Express, it is very difficult to extract current affairs from that, because only 2 or 3 facts are there which you have to extract from that. In that, prelims booster news discussion can help a lot. I used to listen it not while studying. I wasn't like sitting on the table and listening to it. I used to roam here and there and listen to the prelim booster news discussion. I used to cook when I was listening to the prelim booster news discussion. It actually, when we listen to these current affairs, because current affairs is very hyped up thing in the UPSC preparation, and when we listen to it with a free mind, it gets stuck in somewhere in our mind, and when the question comes, as I said, the answer is already in front of you. You just have to mark the correct answer. So when we listen to such prelim booster
at the time when we are not extensively studying, then it is somewhere in our subconscious, and when we see that term there, then we can easily mark it. Like I would give an example from CSE 2020. There was a question, what is West Texas Intermediate? So I heard it in the Film Booster news discussion of OnlyIAS, and there I saw for options. It immediately clicked that yeah, it is a type of crude oil. So in this way, the editorial discussion can help. And when it comes to mains preparation, the major thing which we have to remember is that we have to structure our answer well, because structure is very important in a mains answer. And second is we have to cover the whole paper in 3 hours. Many people suggest that you just write 15 questions but write it the best, but I would suggest that write all 20 questions, because 0 marks is not better than 2 marks. If you write something, you will definitely get 2 marks, but if you don't write anything, you are getting 0. You are losing 10 marks if you are leaving 5 questions. So while preparing for mains, I referred to the Prahar magazine of OnlyIAS, and it extensively covered all the topics. It was designed for different topics like international relation. So there was different magazine on international relation. It covered all the current topics, because IR definitely generally UPSC asks from current affairs only. So there was all the topics of which were in news was covered in the IR magazine. Similarly for internal security, disaster management and all. So Prahar magazine really helped me a lot in I would say getting the extra mark for the answer, because if you write some example from the current affairs, then it will help in the mains answer writing, because this year the questions were very static. So to bring the dynamicity in the answer, we have to use the current affairs. So that portion, current affairs, that Prahar magazine is going to help you. These 2 or 3 things which I used to cover up from OnlyIAS. एंड एक और जो चीज़ था OnlyIAS ने जिसमें बहुत हेल्प किया, बिकॉज फ्रॉम लास्ट 2 or 3 years UPSC is focusing on science and tech portion a lot. So there is in generally most of the newspapers in the Hindu or Indian Express, there are some articles on science and tech. Hindu covers it on Sunday, Indian Express covers it comprehensively in some other day, or it is given there. So there is a dedicated program on OnlyIAS for that, the science and tech discussion, the editorial discussion of Sunday. So that gives a brief understanding of the topics of science and technology, which we have to which we can easily remember, because the language used in the discussion is very lenient and it is easily understandable to non-science background student also. So only like 12 to 15 questions of science and tech is asked every year, and if you refer the science and tech portion on the OnlyIAS, you can definitely like if 15 questions are asked, 12 questions you can definitely like easily can attempt those. So these 3 things which OnlyIAS helped me a lot during my preparation. हाय सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं प्रारंभ का स्टूडेंट हूँ। सर मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर चाहता हूँ। सर पहला क्वेश्चन ये है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कैसे करें, क्या सही अप्रोच होना चाहिए? और सर दूसरा क्वेश्चन ये है, जो एग्जाम से 5-10 दिन पहले मॉक टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है जो 1-2 मॉक टेस्ट में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फ्रस्ट्रेशन होती है और फिर सही से स्टडी नहीं हो पाती है। तो सर इसके लिए क्या करना चाहिए सर? सो ये 2 क्वेश्चन हैं, तो आप रिप्लाई कर देंगे। राइट। सो प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने के लिए मतलब 2 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर से आपको मिलेगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कि क्या है, तो यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो ये रियलाइज़ करोगे कि यूपीएससी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है जनरली। सो वहाँ से ये पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो एलिमिनेशन टेक्निक से जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, या फिर ये इसमें इंटेलिजेंट गैसिंग यूज़ करनी पड़ेगी, और कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्टैटिक पोर्शन से पूछे गए हैं, डायरेक्ट स्टैटिक पोर्शन से हैं। सो अगर कॉम्प्रिहेंसिवली पिछले 3 या 5 साल के अगर पेपर एनालाइज करके देखा जाए तो मुश्किल से 40 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि हर कैंडिडेट बना लेगा अगर उसने पूरा
सिलेबस कवर किया है तो देन उसके आगे जो एलिमिनेशन टेक्निक है तो वो समझ आएगा कि कौन से क्वेश्चन में, जैसे जनरली साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक लगती है या फिर इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें एलिमिनेशन टेक्निक लगती है। सो प्रीवियस ईयर पेपर से ये पता चलता है कि प्रीवियस ईयर पेपर वो चीज़ है जो यूपीएससी अपने को दे रहा है, तो उसमें से अपने को यही बस पता करना है कि यूपीएससी क्या पूछना चाह रहा है, कैसी चीज़ें पूछना चाह रहा है, कौन सी चीज़ न्यूज़ में थी और कौन सी चीज़ यूपीएससी ने पूछी है। तो ये चीज़ें प्रीवियस ईयर पेपर से मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करते टाइम आपको सीखनी है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, 2020 का एक क्वेश्चन, 2021 का एक क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन था जिसमें 2 स्टेटमेंट बहुत एब्सर्ड दिए थे, तो उनको देख के समझ आता कि गवर्नमेंट ऐसा स्टेप कभी नहीं लेगी इंडिया में। अगर आपने पॉलिटी नॉर्मल पढ़ी हो तो आप समझ जाओगे गवर्नमेंट ऐसा स्टेप कभी नहीं लेगी। तो यहाँ पे मतलब प्रीवियस ईयर पेपर जैसे किसी ने देखा होगा, इस साल वो दे रहा होगा अटेम्प्ट, तो उसने देखा होगा हाँ ऐसे एब्सर्ड स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है, तो वो एब्सर्ड स्टेटमेंट गलत कर देगा। सो ये थिंग अपने को एक्सट्रैक्ट करनी है प्रीवियस ईयर पेपर से एनालाइज करते टाइम। और सेकेंडली जो है मॉक बिल्कुल नहीं देना चाहिए 10 दिन पहले, बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया कि वो ऐसा रिवेंज मॉक होता है। अपन कोशिश करते कि अरे इसमें मैं 100 के ऊपर ले आऊँगा और फिर नहीं आते तो फिर और डिप्रेस हो जाएगा आदमी कि अरे यार इसमें 10 दिन पहले मेरे को तो 90 ही आ रहे हैं या फिर कट ऑफ पिछली बार इतना गया था उससे कम आ रहे हैं। तो बिल्कुल मॉक नहीं देना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि 20 दिन पहले मॉक देना बंद कर देना चाहिए और एक एक सब्जेक्ट उठा के रिवाइज करना चाहिए। और हर स्टूडेंट का अलग अलग ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा जो वो उसको कम टाइम के लिए याद रहता है। जैसे मेरे साथ था कि मेरे को एंशिएंट मिडावल कम टाइम के लिए याद रहता था, तो मैं 5 दिन पहले एंशिएंट मिडावल पढ़ लेता था ताकि मेरे को वो एग्ज़ाम में याद रह जाए बस। उसके भले मैं 6वें दिन भूल जाऊँ, क्योंकि मेरे को तो वहाँ प्रीलिम्स में याद रहना चाहिए बस। तो ये चीज़ करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।